जो प्राइम टाइम पे एकता कपूर का शो चल गया है, आई कैन वाउच फॉर इट कि दूसरे प्रोडक्शन हाउसेज वुड एक्चुअली एप दैट. पीपल थिंक कि इंटीमेसी इज अच्छा किस कर लिया, यू नो ऐसे चीजें कर ली, बट इट्स नॉट दैट. it's a profession. I think we act, but हम भी उतने ही इंसान हैं. और जैसे During COVID especially, when I also lost 6 people around me. Oh God. Near India once. जैसे कोई वर्जिन लड़का पहली बार किसी लड़की को घर लाया हो. But I just want to say कि थैंक्स विक्रांत मासी, जो आपने 2 साल पहले हम पर बॉम्ब फेंका था कि मैं बाय बाय बोल रहा हूँ, सारी दुनिया दहल गई. मैंने कहा मुंबई की रानी के साथ इंटरव्यू के पहले कैसे जाएंगे. Finally. Are you happy? See, I came back just for you. अरे you should have done a comeback actually. Now that I think about it. Comeback? हाँ, like a picture अभी बाकी नहीं है. ऐसा कुछ नहीं. वो मैं कहीं गया ही नहीं था, वो बस मैंने थोड़ा लिख लिया था. This is the first time. Mostly it happens with Bollywood actresses. ना, they were like, अरे मैं तो कहीं गई नहीं थी, पर इनका comeback है. So it's the first time a Bollywood hero is feeling that. But we would have missed you. I think it was 8 months. क्या किया आपने 8 महीनों में? किताबें पढ़ी? हाँ, काफी सोया, काफी नींद पूरी की, काफी घर का खाना खाया, बहुत प्ले स्टेशन खेला, बहुत ट्रैवल किया. Spent a lot of time with my family and my son. I had a boy just a few Yes, months before that. congratulations. Thank you. And then उसके बाद जब मैं इन सारी चीजों से बोर हो गया, so I went back and I started watching all my films that I've done all these years. और फिर नुक्स निकाले. बहुत नुक्स निकाले, फिर कुछ फिल्मों को मतलब 1 बार या 2 बार देखा, कुछ सीरीजेस देखी अपनी. एंड बस वही मतलब बिफोर कमिंग बैक टू वर्क जस्ट रिकैलिब्रेटेड, बिकॉज दैट वाज द इंटेंशन कि यू नो जो कुछ भी मैंने बताया ये सब करने का मन था. When looking back, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको वो अनाउंस नहीं करना चाहिए था? मुझे थोड़ा इलैबोरेट होना चाहिए था कि जो अब एक तो आई एम नॉट वेरी टेक savvy, ठीक है, जो सोशल मीडिया पे वैसे ही एक्टिव नहीं है, वो ऐसी खबर शेयर करने आ गया. और आई थिंक एक्स पे लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, आप उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं. तो मैंने उसको जितना ब्रीफ में बोलने की कोशिश की, बट दैट नेवर लैंडेड. It is most amazing to hear an actor whose job is primarily acting, obviously, to tell us about his flaws. Like he can't handle social media. can't, I'm horrible at it. And that's why we have Horrible. So I want to say कि after very long आप लोग ना एक love story लाए हैं, because I have been seeing धड़ाम धुड़ुम धिश, और मेरे लिए हमेशा love story, और love story तो लाए हूँ मगर 2 लड़कियों के साथ. सर 2 सुंदर और टैलेंटेड लड़कियों के साथ. Imagine. बहुत क्या अच्छे एक्टर्स. किस्मत है. क्या किस्मत. बहुत अच्छी किस्मत. ये रियल लाइफ में लड़कों के साथ होता है क्या कि 2 सुंदर टैलेंटेड लड़कियां उनकी लाइफ में एक छोटे से गैप में आ जाए? This is a real. यार देखो, आई कांट स्पीक फॉर अदर पीपल, मैं अपना बता सकता हूँ, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ. नहीं. बट होता होगा यार, जिसका नसीब अच्छा होगा उसके साथ होता होगा. लड़कियों, you tell me, what do you think? आजकल के एनवायरनमेंट में, just dating environment में, because we're talking about love stories, how do you think it works? लड़कियों को लड़के आसानी से मिलते हैं, लड़कों को लड़के आसानी से मिलते हैं? I think जिसके नाम का जो. जिसके नाम का जो मतलब जो नसीब में जो आज. नसीब में जिसके लिखा है. नाम का, आई थॉट जिसके नाम का जुहू, बिकॉज़ शी लिव्स इन जुहू. जिसके नाम सी यू आर रबिंग ऑफ ऑन मी. आई नो आजकल के डेटिंग लाइफ का फटा ढोल हो रखा है बहन, इसलिए मैं पूछ रही हूँ. we would at least, because you girls are actresses, you're being seen so much, you got to keep yourselves a certain way, etc. आपकी लाइफ बाकियों की लाइफ से अच्छी चल रही है क्या, ये जानना था बस केवल. आई थिंक ये जो एक्टर वाला पहले तो पूरा फसाड है कि हमारी लाइफ और बाकी लोगों की लाइफ में कोई अंतर होता है. कुछ अंतर नहीं होता क्या है. बात कर रही हो बहन? इट्स अ प्रोफेशन. आई थिंक वी एक्ट, बट हम भी उतने ही इंसान हैं और जैसे हम सब हैं. सो डेटिंग लाइफ की, जैसे आपने कहा कि यू नो इफ इट्स इजियर फॉर बॉयज और गर्ल्स, आई थिंक लाइक हाउ वेदिका सेड, आई कंप्लीटली अग्री विथ हर. जो आपके डेस्टिनी में होगा वही होगा, फिर चाहे वो जिस भी तरह का प्यार हो, और उससे आप सीखें, खुद के साथ लड़े, एंड व्हाटएवर यू डू विद दैट, आई थिंक व्हाटएवर इज मेंट फॉर यू विल हैपन. So we are still in line, sir. के कतार का समय खत्म हो चुका है. मेरा तो हो Look at गया, you. मेरा निपट गया. मेरा निपट गया. Yeah, you're very happy with it. Such a family man. We see that everywhere and all the time. But tell me about this. I was talking to them behind the scenes, and I wanted to know कि आपने cast कैसे? Because you're the producer, I ask you this. One of the producers, I think it's Did you cast yourself? No.
नहीं, I did not. Terribly Tiny Tales actually, and Netflix actually, they were in talks for Musafir Cafe. So Sharanya Rajgopal, who's the producer and showrunner creator, she's also the writer of the show. So Netflix and Terribly Tiny Tales were already in conversation. And because Netflix is almost like home, मैंने बहुत काम किया है उनके साथ. And we were wanting, क्योंकि हसीन दिलरुबा के बाद एक, you know, we were like, अच्छा, what next? And बस यही, you know, it kind of fell together at the right place. I was also sort of wanting to produce during the interim break I had taken, वो जो 7-8 महीने का break था. So Vijay Subramaniam, who's Collective, you know, he acquired Collective a few years ago. So he's someone who's very, very close to me. He's mentored my career over the last 8 years. So मैं produce करना चाह ही रहा था, हम सोच ही रहे थे, and then this came my way. And then he said कि okay, so if you're going to act, I think you should also co-produce this. Leave the logistics aside, but creatively I think you will be an asset for Musafir. And that's how I came in. And casting के दौरान I was fairly involved. क्योंकि वो प्रोड्यूसर का टैग लग गया था, एंड यू नो, एंड दे वर लाइक कि दीज आर द पीपल we've shortlisted. There was a very generic process and we couldn't have found, you know, better actors, primary actors than these two. I didn't know that you were involved in our casting process. Yeah. Did you? Not directly involved, but of course I was aware of what is happening, who's testing and क्या हो रहा है. प्रोड्यूसर साहब ने पहली तो पता नखर नहीं ये प्रोड्यूसर साहब वाला जो मास्क था, ये अब आज समझ आया. Yeah. मैंने पहले ही ये कंडीशन रखी थी कि मैं जब सेट पे जाऊंगा, आई डोंट वांट एनीवन टू नो दैट आई एम द को-प्रोड्यूसर ऑन द शो. बट एक दिन पता नहीं शेड्यूल रैप हो रहा था कहीं, तो हम थे, और वो केक कटिंग जो होती है मैंडेटरी, वहां पे बता दिया शरण्या ने कि ऑल्सो दो को-प्रोड्यूसर. आई सेड अरे यार, अभी 2 शेड्यूल और बचे हुए, अभी क्यों बता दिया? तो व्हाट हैपेंड? लोगों का रवैया बदल गया? सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं. I think वो प्रोड्यूसर वाला बैगेज भी नहीं लेकर आते. He told me about him being the co-producer on the second day of our shoot or something. आपको शायद याद नहीं है, but he had told me. और मुझे लगा कि ओह ठीक है, cool. I mean, because I think for the kind of actor that he is, वो सेट पर किसी भी तरह का वेट या बैगेज नहीं लेकर आते. एंड आई थिंक इट इज व्हाट, ये मैं दिल से कह रही हूँ, बट या आई थिंक नहीं, इसको तो बोलना पड़ेगा यार. मैं 15-16 साल पुराना रिश्ता है मेरा इससे. करे भाई, You better say good things about me. एंड आई एम नॉट पेड फॉर इट. I have to know at this point, for you all always co-producer करता क्या वैसे? It's a collaborative effort. It is a collaborative effort. I think. चलेगा तो हमको भी बता. I think I'm a creative guy. Yeah. You know, been acting for such a long time. तो script development हो गई, casting हो गया, you know, yeah, just with everything, the packaging of the show, the creative aspect of it, strictly the creative So if aspect. people like the show a lot, which I suppose they will blow you their kisses. I mean, I've contributed a little to it, I think, but the whole credit goes to, I mean, Vedika can sort of second this, that Sharanya Rajgopal and Anuj, who are the main, you know, the whole and soul of TTT. Terribly Tiny Tales का काम हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं. You know, they've been making short content, microfilms and everything. Now they are doing larger formats. But the kind of work they've done over these years is testimony to the fact that, I mean, you know, कि अच्छा काम कर रहे हैं वो इतने सालों से. So it's not just homemade stories, but TTT and homemade that have collaborated together. I want to ask you quickly, for our people who love being actors, right? There are so many people in the world. आपको तो पता है कि ढेरों डजन में आते हैं, ट्रेन्स में आते हैं. सबका एक सपना होता है कि मैं एक्टर बनूंगा. आप इस वक्त जो कर रहे हो, do you realize, ऐसे see the dream with me, बहुत सारे लोगों का सपना है ये for to be. Is there anything, because all of you have started differently, and ऐसे नहीं है कि किसी माँ बाप का हाथ रहा है सर पे. It's been hard work. It's been, give us a detail. मुझे बताइए, I'll ask that question in front. मुझे बताइए, जो इतनी सैकड़ों एक्टर्स आते हैं, वो इस वक्त आपको देख के सोच रहे हैं, हाय काश मैं वहां होता. Is there a formula या कुछ भी जो आप बता सकते हो? Let's start with the girl whose first radio station visit it is. I don't know. Someone had once told me कि बस टिके रहो. You know, like बस टिके रहो, just keep going. And जो होना है होगा. And I think that everyone comes with a lot of it. It is a very hard industry to navigate. I was telling someone just yesterday that I always wanted to be an actor. बचपन से ही मुझे एक्टर बनना था. वो ख्वाब था ना कि मैं स्टार बनूंगी, मैं एक्टर बनूंगी. समुद्र के सामने हाँ, खड़े कर. मतलब चनिया चोली पहन के मैं नाचूंगी like माधुरी दीक्षित and all of that. But यार, it's too aspirational. तो it's a, like I remember being a child और मैं सोच रही थी कि मतलब ये
इट्स अ क्रेजी थिंग टू टेल पीपल कि मैं एक्टर बनूंगी. कितने लोग एक्टर बनते हैं, यू नो. एंड मुझे अब एहसास हो रहा है आफ्टर I've been around for 7-8 years, and it's been a very slow and very like uneven process. But now I'm realizing कि हर रोज मेरा एक ख्वाब पूरा हो रहा है और मेरे को पता भी नहीं चल रहा क्योंकि हमारे ख्वाब बढ़ते जाते हैं, राइट. वी कीप सीइंग न्यू थिंग्स. आई वांट दिस नाउ, आई वांट दिस, आई हैव दिस बिगर एस्पिरेशन. लेकिन हर रोज एक छोटा सा ख्वाब मेरा पूरा हो रहा है. एंड आई थिंक नाउ आई एम लर्निंग कि there's a lot to be grateful for on a day-to-day basis. What is the last thing you bought from this ख्वाब जो पूरा हुआ है? यार कल मेरा ट्रेलर लव स्टोरी, आई हैव डन अ लव स्टोरी. मैं अपने आप को रोमांस करते हुए देख रही हूँ. एंड व्हाट अ प्लेटफॉर्म, व्हाट अ like I remember hearing that I was going to be romancing Vikrant Massey. I was like, okay, okay. I don't know why I call you Vix. I feel like Yeah, that. everyone does that. Everyone does that. जब विक्रांत पे प्यार आता है, they call him Vix. Look at you. Like, No, that's her generosity actually. They how don't. dare you tell us you're they- leaving the industry? How dare you? How dare you? How dare you? Really? मेरा वो ख्वाब पूरा नहीं होता अगर वो छोड़ देता है इंडस्ट्री. सोचो. She's damn generous. No, she's too generous. Very cute. Please, Mahima. I actually started off very young. We know. In fact, I believe कि you were the youngest actor to get the lead role. ऐसा कुछ तो Yes, I मैंने mean, I पढ़ा think one है ना? of the youngest actors. मेरी mom को actor बनना था, but because of her own struggle, she couldn't do it, and वो चाहती थी कि उनका सपना मैं पूरा करूं. And I started at the age of 9-10, and I think my mom always wanted to see me on the big screen. You know, वही कि मतलब theater में साड़ी पहनकर गाने, you know, बारिश में नाचना, all of that. You know, she wanted me to see that, and it was I think at that point it was an impossible dream. मुझे ऐसा लगा कि ये कभी पूरा नहीं हो सकता. लगे रहो. I think that's one thing that I wanted to tell everyone. I had a lot of idols in front of me, whether it was Mrunal, whether it was, I mean, SRK being the biggest inspiration. मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ. You know, because so yeah, I think television से शुरुआत हुई. बहुत सारे अलग अलग तरह के किरदार किए, but हमेशा से जिंदगी में और आगे बढ़ना था, ग्रो करना था, फिल्म्स करनी थी. एंड तब तो OTT बिल्कुल था भी नहीं. एंड यू नो सब कुछ करना था. So television हुआ, and then अंतिम हुआ out of nowhere. I think which was the biggest blessing. फिर उसके बाद ऐसा लगा कि अब लाइफ चेंज होगी, अब बस मुझे हजारों कॉल्स आएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता. आपको पेशेंस रखना पड़ता है, आपको परसिवरेंस रखना पड़ता है, एंड चेस करना पड़ता है. बहुत आई थिंक बहुत कुछ है जो आपके कंट्रोल में नहीं होता. आपके कंट्रोल में सिर्फ वही है कि जो आपके पास आता है आप उसे अपनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी कैसे बनाए. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई ऑलवेज फोकस्ड ऑन. एंड यू नो देयर आर टू मेनी थिंग्स दैट यू इट्स अ डिफिकल्ट इंडस्ट्री टू बी अ पार्ट ऑफ, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है. हम सबकी जर्नी, जो हम यहाँ बैठे हैं, हम सबकी जर्नी बहुत अलग है एक दूसरे से, विच इज़ वॉट मेक्स इट यूनिक एंड स्पेशल. एंड मुझे सबको बस यही कहना है कि यार इम्पॉसिबल ड्रीम नहीं है, बट डटे रहिए, एंड यू नो आपके सपने जरूर पूरे होंगे. विक्रांत, आप अपना जर्नी बताइए, because obviously we know, we've seen you, you know, on TV shows, we've seen your growth. सबके साथ तो नहीं होता, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उस एक्टर को जो इस वक्त देख रहा है और कह रहा है कि Yeah, I think most of it they've actually said. You know, I think perseverance is the most important thing because it's a very, very competitive industry. और हमारे कुछ याद है आपको किस्सा जो आपके साथ हुआ था? बहुत किस्से हुए, बहुत सारे. एक सुंदर वाला सुना दीजिए ताकि जो सुन रहे हैं उनको होप मिले. Yeah, I mean, those audition rooms are like, the energy in an audition room is like an examination hall. And when you're entering a room, वहाँ पे आपको कुछ अपने दोस्त मिलते हैं, कुछ acquaintances मिलते हैं who are actually, you know, you're close to them. आप जानते हैं उनको. हर दूसरे तीसरे दिन हर audition room में आरामनगर में आप मिलते हैं एक दूसरे को. You know, and you're also sharing your information with each other because when you're starting off, कोई आपका agent नहीं होता है, nobody is there, तो आप दोस्तों में ही एक बार बताते हैं. But you know, so for example, if you entered a room, you know there are 50 other people vouching for the same role, right? And you know कि ये सब उसी रोल के लिए आए हैं, and you know कि most of them have to make ends meet. तो it's very cutthroat, you know. To cut the long conversation short, I think हम सब जानते हैं कि हमारे देश में Bollywood, cricket और politics, you know, these are the most popular professions in our country, and everybody wants a pie of that cake, right?
तो बस डटे रहिए, परसिवियरेंस रखिए. इफ यू आर गुड एट व्हाट यू डू, यू विल बी नोटिस्ड. एंड इतनी कॉन्वर्सेशन होती है ना मलिश्का, कि अभी बीच में हाल ही में हमने देखा था 5-7 साल पहले कि इनसाइडर आउटसाइडर का इतना चल रहा था, नेपोटिज्म का आए दिन चलता रहता है. मतलब ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं. देयर आर सो मेनी किड्स आई मीट, दे टेल मी कि भैया मेरे को ये ऑफर आया है पर मैं सिर्फ लीड करना चाहता हूँ. तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि देखो, अगर अच्छे हो तो लीड भी आएगा. एंड आई एम माई ओन केस स्टडी. तो मैंने भी जब टीवी से शुरू किया था, तो टीवी में भी मैं मतलब बालिका वधू में हम छोटा ही रोल कर रहे थे. लीड्स वो समवन एल्स. बट द आइडिया इज कि बी परसिस्टेंट, बी कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ आल्सो. अपने आप को भी अपडेट करते रहना बहुत जरूरी है, So that's for all the people who want to get into the industry. Perseverance seems to be it. But there must have been a time जब आपने आईने के सामने खड़ा रहकर कहा, चौकटा तो अच्छा है. है ना? You are that happened ना कि दिखता तो अच्छा हूँ, स्मार्ट हूँ. You must have नहीं. कुछ दिन ऐसे होते हैं, कुछ दिन ऐसे भी होते हैं कि नहीं देखना शक्ल. That's really pretty people saying this. It's just so scary. फिर normal बंदों का क्या होगा? But I can imagine कि हर दिन उठ के same नहीं होता. But at some point you are like, I don't know, हाँ, because आज I thank you, I appreciate the compliment first, but अंदर से इतनी खुशी हो रही है ना कि वो शायद झलक बाहर नजर आ रही है, पर कभी कभी वो अंदर दबाव भी रहता है ना कि नहीं चल रहा, नहीं हो रहा, क्या करे, then you don't feel pretty also. but you are. So are you. I mean, beautiful. And so are you. Thank you. So are you. मैंने भी तो कर लिया 2-4 acting वाले. We'll talk about that later. Okay. So, alert. हमने novel पढ़ी है. So we want to. So we know the end. We're not gonna ask you. I'm not gonna give spoilers. मगर end वही है. नहीं. So if I can say, I think Sharanya Rajgopalu, she's far more equipped to sort of talk about this, but since she's not here, I will take this on behalf of her. The book was a template actually, क्योंकि ये सब जानते हैं कि मुसाफिर कैफे की एक कल्ट फॉलोइंग है, और ख़ास तौर पे हिंदी लिटरेचर में बहुत कम ऐसी किताबें हैं जिनकी मतलब रूरल इंडिया में भी और अर्बन इंडिया में भी एक कल्ट फॉलोइंग है. So it was a template, and Divya Prakash Dubey, who's the author of the book, was generous enough. He collaborated with Sharanya. He was the co-developer and writer on the show as well. Legally rights हमने acquire किए हैं. So he was generous enough to let Sharanya actually go beyond the book. Okay. Because it's and it's a large format, right? I mean 8 episodes, लंबा format है. So यहाँ पे आपको leeway मिलता है to sort of go beyond what is already written. Okay. 2026 में ऑडियंस बहुत शानी हो गई है. उनको पता है कि क्या ये यहाँ पे, and they call it out also. क्या आप have you kept something ऐसा मद्देनजर कि like have you figured out what is the formula जो चल रहा है? Because with things crashing and burning, entertainment industry में lots of things crashing and burning, especially big screen को लेकर. विक्रांत, आपका क्या take है इसके बारे में? I mean, that's always been the case, trends have always dominated. But by the end of it, and this I strictly speak for myself, I think कि we are living in an age जहाँ पे हर चीज़ जो है इतनी rapidly evolve हो रही है, जो चीज़ आज trend है वो कल redundant हो जाती है. But then there are certain things which will always stay the same, which is an honest storytelling. अगर मैं सिर्फ सिनेमा की बात करूँ या कहानियों की बात करूँ, कुछ किताबें जो हैं वो 100-150 साल पहले लिखी गई हैं पर वो आज भी रेलेवेंट हैं because of certain things which hold value. And I very firmly believe in the fact कि innovation तो बहुत rapidly हो रहा है जो मैं कह रहा हूँ, but value innovation is something which will always hold the key. If anything you've innovated which holds a certain value for the consumer, because हम consumer industry में हैं, हम आपके लिए फिल्में बनाते हैं, कहानियाँ बनाते हैं. If it holds a certain value for you, if you're willing to sort of sit and give your time and hard-earned money for it, it will always click or resonate with the audiences. Is there something that you think, again, like as consumers के आजकल के audience के साथ ये चलता है? Is there a thing you can give me? मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि mad level of action works at this point. I love stories. I'm so glad कि आप ये लेकर आए हो. But at this point ऐसा लग रहा है कि action works. I don't think you can say that also, ना. अच्छी एक्शन पिक्चर चल जाएगी, शायद दूसरी ना चले. Like I don't know if there's a formula. I just feel that what I have observed over the last couple of years, that what we have been following is some kind of a herd mentality.
कि अगर एक चीज चल जाती है तो हम 4-5 पिक्चरें भी वैसे ही बनाते हैं. एंड दिस इज And if I can just add, and I think I want you to take this forward because we've done TV, this was the same in TV also. कि एकता कपूर ने जो शो बनाया है, जो प्राइम टाइम पे एकता कपूर का शो चल गया है, I can vouch for it कि दूसरे production houses would actually ape that. Now take it forward. like again speaking from television's point of view and then I'll come to films. जब नए या अलग subjects लेकर आते भी थे टीवी में तो उसकी ज्यादा audience नहीं थी, उसकी ज्यादा demand नहीं थी. So I think it's a constant struggle and I'm not sure if it's a confusion but I don't think किसी को पता होता है. शायद एक पिक्चर चल जाती है और फिर हम 100 वैसी बनाने जाते हैं and that's when even the audiences get bored of it that we don't want to watch repetitive content because right now we have so much of accessibility to OTT platforms to cinema कि हमें I think what pulls us to cinema is something which is the bigger gap. I think OTT के आने के बाद we need something which makes us want to travel to theaters, have that popcorn, buy that ticket and go watch that film. So I think what according to me doesn't work, and again I'm speaking from the place of from an audience's POV, is herd mentality according to me doesn't work After a point. after a point क्योंकि एक नागिन आएगी, फिर एक मक्खी आएगी, फिर एक crocodile आएगा. Saturation आ ही जाता है. Yeah. मतलब it's like eating, right? अभी अगर and we as creators also need to sort of give the audiences that buffet, that platter. But thanks. I just got a quick question for my rapid fire whenever that happens, that is. But let me go through your lines, okay? Like I said, you all have quotable quotes. Let me start with this one and then we'll go. तुम में वो वाली एनर्जी है. बोलिए आपकी Please, line बोलिए, है. आप बोलिए. मैं आपकी लाइन है. इरशाद. जैसे कोई वर्जिन लड़का पहली बार किसी लड़की को घर लाया हो. That was actually our chemistry test scene. Yeah. So now I have another question, but these people keep layering this on. What the heck is a chemistry test? क्या होता है? In a show like मुसाफिर कैफे जहाँ सब सिर्फ हम 3 कैरेक्टर्स है predominantly, अगर केमिस्ट्री ना चले तीनों के बीच में, तीनों तीनों के बीच में तो कैसे चलेगी? You have to get invested in our relationships for you to feel what we're trying to make you feel, right? And that's only going to happen with the chemistry. अगर हम दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री ना होती तो तुम कैसे पढ़ोगे हमारे प्यार के लिए? तो मुझे बताओ क्या होता है ये टेस्ट? सीन होता है. ऑडिशन जो हमने किए थे बस वही हमें विक्रांत के साथ, क्योंकि he got cast first obviously. So after he got cast they were like, okay, now we've liked these 2 girls, Sudha and Preeti. Just the last check before we move on is that do Sudha and Preeti work with Chandar? So that's what we do. And I think एक familiarity होनी बहुत जरूरी है. One thing we were very clear about कि देखिए कई बार ऐसे होता है कि you land up on a set, there is bound to be awkwardness when you're doing physically intimate scenes, right? And it is a romantic show. It is about falling in love. तो वो और like you said earlier कि audiences बहुत शानी हो गई है, वो देख लेते हैं, उनको पता चल जाता है, right? तो how close to reality you can go? And also because the benchmark is so high with the book in itself. तो वो familiarity होनी बहुत जरूरी है. People think कि intimacy is अच्छा kiss कर लिया, ऐसे चीजें कर ली, but it's not that. It's holding somebody's hand. Yeah. That's such an intimate action because I can grab anybody's hand, but to really hold someone's hand with feeling, that only comes when you develop that. Like I to get butterflies when I hold somebody's hand, because to me it's a very sweet feeling. Like Vikrant was telling us, like, remember the kiss thing, the aankhon wala kiss. He was like, he kisses his wife, पलकों पे ना ऐसे इसने बोला था. Real life बीवी को अपने. Real life. And to him, he had told us that during when we had done like intimacy workshops, he's like, that's the most intimate thing to, and nobody is going to think of that. And you have to develop those little nuances, right, for people to fall in love with us falling in love. All right. So I'm discussing concepts, okay? Go. आपको लगता है कि आज भी virginity बहुत बड़ा deal है? Like अगर मुझे आप पूछे तो नहीं, बिकॉज मैं बड़े शहर से हूँ, मैं मुंबई से हूँ. मैंने आसपास वो माइंडसेट नहीं देखा है अपने आसपास. बट क्या ऐसा माइंडसेट नहीं है वो कहना गलत होगा. तो बहुत बहुत सारे सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स में है आज भी.
Yeah, but I feel like largely आज भी है, especially लड़कियों को लेकर, I'm sure, है ना? आई थिंक हम बॉम्बे और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बैठकर हम बात कर सकते हैं कि एवरीथिंग इज़ वीव कम वे फॉरवर्ड, बट हियर वी आर ऑल्सो, मतलब मैं लार्जली बात कर रही हूँ. आई थिंक दिस डज बिकम अ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और हाँ. कंसिडरेशन, एंड आज भी छोटे शहरों में मुझे लगता है कि अभी भी दिस बिकम्स अ ह्यूज टैबू. And I think it's still very much there, and especially लड़कियों के लिए it becomes a very big deal. Correct. I think this line caught our ear also because it was said about a boy. So I was like, oh. So woman writer who's challenging, What would you like to say about it? No, of course, right? It depends on where you grow up and what people's perspective. But I don't even think it's that. I think it's more about what your perspective is. Like, do I think it's a big deal? No. Do I think it's a sacred thing? Yes. Yeah. The thing is, what I also try to do with these interviews is get people to know you as people, and also to be commentators of what is going on in the world in the most fun way possible. Okay, क्योंकि आप लोग बचपन से ही पैप्स के सामने रहे हो, so I want to ask you about पैप्स and the culture. Tell me कि पैप्स के culture के बारे में आपको, because things have happened even recently and I've seen you all also in front of the पैप्स. There are very different ways जो पैप्स को handle किया जाता है. What is your favorite नुस्खा? What क्या है? It's a thing that you can't live without. It's a thing that you've got to live with. But यार, you're actually asking the wrong person, ठीक है? Because I'm not the right person because I'm not a part of that ecosystem. तो I don't know what to say. I mean, you're not part of that ecosystem. I am not a part of that PAP ecosystem. I am not. ते येऊन तुमचे फोटो नाही काढत. विक्रांत की विकिम विक्स नहीं. नहीं करते हैं वो, पर मैं उनको बुलाता नहीं हूँ, ठीक है? तो मैंने कभी उनको बुलाया नहीं तो है. how do they know where you are? वो अब बुलाते हैं, प्रोड्यूसर्स बुलाते हैं कई बार, या फिर वो कई बार कुछ प्रोडक्शन हाउसेस के बाहर रहते हैं, कई बार वो एयरपोर्ट्स के बाहर रहते हैं, बिकॉज वो उनकी रोजी रोटी है यार, वो उसका पैसा मिलता है उनको. But do you still feel that there should be, especially as women, I want to ask you, do you feel that there should be some kind of decorum, कुछ तो कहीं ना कहीं, because I recently have seen people, especially women, say something back. No, I feel it's important to have a dialogue if it doesn't sit well with you. Good. Okay. And maybe your agency can do it or you can do it, because you need to also draw a certain boundary. अब बाउंड्री ड्रॉ करने की कुछ फ्लिप साइड मैंने ऐसे भी सुने हैं कि ओ इफ यू ड्रॉ सर्टेन बाउंड्री यू माइट नॉट बी पैप्ड, एंड आई फील बीइंग पैप्ड हैज आल्सो बिकम अ क्वेश्चन अबाउट बीइंग रेलेवेंट, which is why people, even like I personally like to be seen when my work is out, which is why मैं जब भी पैप्ड होती हूँ मुझे हर कोई ये पूछता है कि आप कहाँ थे, आप दिख क्यों नहीं रहे हो, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आई ओनली वांट टू बी सीन when I have a release or there is something to talk about. But that also becomes a point of conflict, because being seen and being relevant is far more important. But according to me, I feel that is not equal to the kind of work you bring to the table or the kind of your craft or any of that. But that has become a part of ecosystem. You can't escape it. But as you mustn't. I'm just wondering कि क्या there would be a time in the future जहाँ आजकल के actors like you guys will change the ecosystem in a way where it's just more respectful. That's all. I think so. So I feel it's just about having a conversation and drawing that line and having a dialogue about what sits well with you. And I think जब आप सामने वाले को respect करेंगे वो भी आपको उतनी respect करेंगे. I think that's what I have to say about it. Okay. I think the pap culture of today is a evolution of what paparazzi originally was, right? Anybody, if you saw a film star anywhere, if I as a fan was sitting on Juhu Beach and it just so happened that Vikrant Masi passed by, me taking that picture made me a paparazzi, right? Today people are getting jobs out of doing this, right? So you got to respect that. It gives the photographer their Roz Ka Khana, and it gives me as a young actor visibility that I wouldn't otherwise get. So it is a symbiotic relationship which should be respected by both parties. That's just the way I look at it. And you would call it out if you think that it would? I mean, of course, if I felt objectified, then it is my right to tell you, right? Like mental health. All right, before we wrap this up with our wish list question, I'm going to keep it so short. Yes. Mental health क्या करते हैं? I do this thing called Monday Mental Health. I do this after the COVID season क्योंकि सब लोग के mental health की बात लग चुकी थी. लग चुकी है. Did you ever figure कि mental health एक issue था? I mean, ये पिछले 10-12 सालों में ही हुआ है. So I was also ignorant about the fact. And I concede to the fact कि जब तक ये सारी चीज़ें आप लोगों की वजह से
पब्लिक डोमेन में नहीं आई, क्योंकि ये मुहिम जो आप भी चला रही हैं और भी लोग चला रहे हैं, यू नो देयर हैव बीन celebrities who've spoken about mental health. It plays a very important dominating factor in fact in your life. आपको realize नहीं करते हैं कि how it's probably weighing you down, how you are probably not realizing your own potential. So from time to time, whether it is a part that I have played which has not left me even after shoot, or whether it is you know, your loved one's health, or during COVID especially when I also lost 6 people around me Oh God. near India once. So it did weigh me down. तो then therapy was something, कभी 15 साल पहले अगर मेरे से पहले की जनरेशन को अगर आप पूछें तो वो उनको पता ही नहीं था क्या था, लेकिन आज even someone like my father who's 74 75 right now acknowledges the fact कि हाँ, you know, ये भी एक चीज होती है which is beneficial for you, और वो करना चाहिए. तो वो 15-20 साल पहले नहीं था. तो ये पब्लिक डोमेन में जब तक ये सारी चीजें बातें नहीं होंगी, अवेयरनेस नहीं होगी, तो नहीं होगा. What do you do? आपका मेंटल हेल्थ चकाचक रखने के लिए क्या करते हो? टाइम टू टाइम मेडिटेशन कर लेता हूँ. आई थिंक अब सब ये जानते हैं कि यू नो एनी फिजिकल एक्टिविटी, चाहे हिटिंग द जिम, लिफ्टिंग वेट्स और रनिंग और मेडिटेशन और योग, इज डायरेक्टली impactful to your mental health. And then of course I think having a very strong family system is something which is very important. To go back home to those people you can definitely rely on during your good and bad days. You know, तो वो बहुत सारी चीजें हैं. I mean, I don't exactly know, I'm figuring it out myself. But मैं क्या करता हूँ is, you know, to have the एक जो आपका खुद का इकोसिस्टम है जहाँ पे, you know, you can be yourself, आप दिल खोल के बात कर सकें. You know, by the end of it I think if you're able to express yourself with all honesty and sincerity, वो जो कहते हैं ना weight जो है आपका वो हल्का हो जाता है. आप क्या करते हो? I think a mix of everything that he said. बहुत सारी चीज़ें हैं, you know, right from meditation to probably going to a therapist to having great support system, going to a friend who you can just be yourself with. I also have a dog, so just giving him a big hug really, really helps. Sometimes, yes, and sometimes just being by yourself and understanding and retrospecting and identifying. मुझे लगता है because of this awareness now that we know that ये एक इशू है, there is a void which could be anything, void, trauma, आप कुछ भी कहो. I think because of awareness we at least have a term to it, we know how to go about it, we know you may not be able to fix it overnight because वो जो issue है वो भी काफ़ी सालों से deep rooted है हमारे अंदर. So I feel it's an ongoing process, you know, and because आजकल because of social media, insecurities, fears, competition, and especially for our profession, there's so much that you're dealing with on everyday basis. So it's important to just keep a check on yourself. And I think for me, the best therapy or just to let out, I think crying is underrated. I agree, sister. Crying is रोते हो underrated. विक्रांत? मतलब मैं तो खुल के. और and I feel being vulnerable is so beautiful. Just being able to let out your emotions, because अंदर रख कर ना फिर आप पत्थर बन जाओगे. Correct. You know, so I feel Crying is very crying really comes handy. I have actually said this on the radio to people कि cry, please cry, because I would cry so often, especially after COVID. Yes. Nice to hear. मतलब, you know, Vikrant, when he's on screen, he brings vulnerability in a way that is. So I'm glad to hear कि you're saying कि मैं रो भी लेता हूँ. Wait for Musafir Cafe. Hi. You're going to allow us, aren't you? I hope so. I But hope we so. couldn't have had a better Chandar than Mr. Massey. Say yours before. Mental health, I was going to say they can say, but I think I really do appreciate, I've had my own, like everyone has, my journey with mental health, and I do appreciate how it is now a global dialogue, and there's always someone that you can find maybe on the internet who has shared a similar experience to you, and that is quite comforting. Having said that, I also do respect and appreciate that some people might think of their mental health journey as a very personal experience. I am one of those people. So, I mean, that's what it is. I very much appreciate that there's a dialogue and I can learn and help and share and, you know, feel empowered and perhaps provide empowerment to someone who's going through a similar experience. But I found that in my experiences where I might be dealing with a difficult time, it's a very personal experience for me. And I like to have that space to myself. Yeah. Whatever it takes. Thank you so much. Thank you. So glad to have
had this day with you guys. And if I may also say this thing, because I'm a huge fan. We've all heard you every morning. Mumbai ki Rani, यहाँ पे Malishka. But thank you for being the voice for the voiceless. Thank you. And being the voice of conscience for this beautiful city. Keep up the great job, and Mumbai is extremely proud to have you. Oh my God, I cried. Can also send this to my boss. can you say Malishka ke saath like you do? Yeah, you should. Of course. Can sir. you? Super Hits 93.5 Red FM पर I have the dream cast of Musafir Cafe सिर्फ और सिर्फ Malishka के साथ बजाते रहो. Goosebumps, fab. Love it. बजाते रहो 93.5 Red FM बजाते रहो